viewers, if you like my videos, then please subscribe the channel and click on the bell icon. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, sir? Alhamdulillah, fine. Welcome all panelists. Thank you so much for your time and availability regarding the today's session that is based on growth strategies as the Career Bista is working on a platform that building the pathway between the institutions and the corporate sector. Okay. Sir, we have started our session now from today's topic and started from Mr. Zeeshan Arif that is based today's about today's topic that is based on growth strategies. And what you have said about the today's topic, kindly elaborate the experiences and ideas regarding the today's topic. All right, Zee. Assalamu alaikum to all our panelists and participants. And thank you, Zeeshan Javed sir, for giving me the opportunity to say something on this topic at first. Well, being a finance personal, हम ग्रोथ के मीनिंग ये लेते हैं कि इन केस अगर कंपनी जो है वो आज किसी एक स्टेज पे खड़ी है और बीइंग ए शेयर होल्डर अगर हम इसको देखें तो शेयर होल्डर को एक टाइम के बाद उसको कितना एडवांटेज मिल सका in the shape of capital gain and dividend yield and something else. But चूंकि हमारा जो मेजर इस वक्त जो फोकस है वो ये है कि we are not actually discussing the numbers which actually the company gets after implementation of the marketing strategies, and most of the points are there. Here we are actually discussing how the growth strategy can involve in the company progress, how the company can grow, what strategies the company should use for this purpose. तो उस हवाले से अगर हम ये देखें तो ग्रोथ स्ट्रैटेजी के हवाले से जो मैं समझता हूँ कि कंपनी अपनी बिजनेस के हवाले से, उसकी इन्हांसमेंट के हवाले से, उसके अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के हवाले से किस तरह उसको ग्रो करती है, आइदर द फर्म इज स्मॉल और लार्ज। तो इसके अंदर जो मैं समझता हूँ या जो मैंने थोड़ा बहुत इस टॉपिक को ऑनलाइन स्टडी किया तो उसमें जो चीज़ें निकल के मेरे सामने आई, उसमें अगर मैं कंपोनेंट्स के ऊपर बात करूँ तो I found four major components which are connected with the goal, the growth strategy for any company. The one is goal, कि कंपनी ने अपना गोल क्या सेट किया है, उसका क्या करना चाह रही है, what actually the company wants to achieve, या उसकी मैनेजमेंट जो है वो क्या अचीव करना चाह रही है, किस स्टेज पे पहुंचना चाह रही है। अल्टीमेटली उस गोल को अचीव करने के लिए जो अनदर कंपोनेंट है, दैट्स पीपल, द वन हु विल वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर गोल सेट बाय द कंपनी। फिर जाहिर है अगर उसका गोल है और लोग काम कर रहे हैं तो पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट या सर्विस इन्वॉल्व होगी जिसको एक स्टेज तक पहुंचाना होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम सेल फोन्स की बात करें तो पहले जब सेल फोन नहीं थे और जब आए थे तो उस वक्त एक बड़े बड़े एक फीट के फोन हुआ करते थे, और आज जो है हम एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब उस वक्त जो एक सोच को लेके शुरू किया गया था, आज वो यहाँ तक पहुंच गया है कि आज हम मोबाइल पे कैन डू एवरीथिंग ऑन द एंड्रॉयड फोन और आईफोन। And the fourth one is how they achieve this goal, what tactics they are using for this, ताकि वो अपना जो सेट गोल है उसको वो अचीव कर सके। तो ये तो चलो एक बात हो गई कंपोनेंट्स के हवाले से, और लाइक कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज उनको यूज करनी चाहिए, तो थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो बेसिकली जो मैंने
थोड़ा बहुत स्टडी किया बेसिकली, थोड़ा एक्चुअली इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द मार्केटिंग सेगमेंट। तो उस हवाले से मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, तो मेरे पास जो इंफॉर्मेशन निकल के आई वो ये है कि what company can do for the expansion of the company and for the development of the company, for the enhancement in the products and services। तो उसके लिए जो पहली चीज मेरे सामने आई दैट वाज मार्केट एक्सपेंशन, कि आप लाइक एक मार्केट एक जगह एग्जिस्ट करती है और उसी को आप प्लान कर रहे हो कि आप उसको किसी दूसरी जगह पे जाके जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट आपको नजर आती है, तो वहां पे आप उसको जाके फैलाते हो, यानी एक नई जगह पे अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हो। जो प्रोडक्ट ऑलरेडी इन द मार्केट है उसको दूसरी जगह पे जाके इंट्रोड्यूस करवाते हो। फिर एक और चीज जो मैंने देखी दैट वाज मार्केट सेगमेंटेशन, और इसके अंदर जो है बेसिकली सेगमेंट्स के हवाले से काम होता है कि आप क्या करते हो कि लाइक आप ये देखते हो कि आपकी जो आगे यूजर्स हैं वो कौन है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को जो है वो सेट करते हो, मार्केट के अंदर लेकर आते हो। देन यू लाइक एक एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करते हो, दैट्स कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। कि आप एक एग्जिस्टिंग मार्केट है और उस मार्केट के अंदर आप प्लान करते हो कि इसी के अंदर जाते हुए, इसी मार्केट में रहते हुए हम अपनी प्रोडक्ट को बेचें। अब जाहिर है ऐसी स्टेज के ऊपर जो मेन चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि आपके यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स आप कितने हैं उसको सेल कर पा रहे हो। इस एक एग्जांपल इसके अंदर लेके आऊंगा। व्हेन आई वाज डूइंग एमबीए बैक इन अराउंड 14 to 15 years अगो, तो उसमें हमारे एक मार्केटिंग के टीचर थे, उन्होंने बड़ी एक अच्छी एग्जांपल दी कि भाई कंपनी जो है वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज करती है, और उसमें एक स्ट्रैटेजी एक कंपनी ने ये भी यूज की कि लाइक वो सोप बेचती थी, साबुन। तो वो एक मार्केट्स के अंदर वो क्या करती थी कि जो उसका राइवलरी था, यानी उसका जो टक्कर का मार्केट के अंदर दूसरा वेंडर मौजूद था या प्रोडक्ट मौजूद थी, तो वो क्या करती थी कि जो शेल्फ पे जितना माल उसके लगा होता था उसको वो बाय कर लेती थी, वो शेल्फ उसका खाली हो जाता था और अपनी प्रोडक्ट वो साथ साथ दूसरी शेल्फ के ऊपर वो डिस्प्ले कर देते थे। तो हुआ ये कि अब जो जिनकी प्रोडक्ट्स पूरी सेल हो रही थी तो वो तो बड़े खुश थे कि यार माशाल्लाह हमारी प्रोडक्ट जो है बिक रही है, बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम हुआ ये कि उनकी सेल जो है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉप होना शुरू हो गई। इट इज बिकॉज लोग तो उसको इस्तेमाल कर ही नहीं रहे थे, वो प्रोडक्ट जो है वो दूसरी कंपनी बाय करके उसको अपने पास जो है वो फेंक दे रही थी या उसको स्टोर कर दे रही थी, और उसकी जगह पे उनकी जो प्रोडक्ट थी वो इस्तेमाल होना शुरू हो गई, लोग वो समझ आना शुरू हो गया, उनकी प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गई। ऑल्दो द स्ट्रैटेजी इज एक्चुअली अ नेगेटिव, क्या कहेंगे उसको, एक नेगेटिव स्ट्रैटेजी, मोड ऑफ स्ट्रैटेजी है ये, कि आप एक कंपनी को इस तरीके से डैमेज कर रहे हो कि बजाय कि आप पॉजिटिव मोड के साथ मार्केट में उतरो ताकि लोगों को प्रॉपर तरीके से आप प्रोडक्ट को समझा सको, तो आप एक नेगेटिव स्ट्रैटेजी यूज करो। तो दिस इज ऑल्सो एन स्ट्रैटेजी। तो इट डिपेंड्स के बिजनेस को आप किस तरीके से आगे लेके जाते हो। देन फिर उसके बाद बात आती है प्रोडक्ट एक्सपेंशन की। हमने ये देखा कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम अगर एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर मौजूद है तो उसी से मिलते जुलती सेम ब्रांड की दूसरी प्रोडक्ट उसी कंपनी की विद सम एडिशंस ऑफ लाइक अगर हम सोप की बात करें तो सोप में कलर्स ऐड हो गए, फिर उसके बाद उसके अंदर लाइक मेडिकेशंस के हवाले से चीज़ें ऐड हो गई, कुछ मेडिकल रिलेटेड कि आप जैसे सेफ गार्ड हो गया, डेटॉल हो गया, तो वो डिफरेंट चीज़ें लेके आ गए। लक्स पे कुछ डिफरेंट फ्लेवर्ड फ्रेग्रेंसेस के मटेरियल लेके आ गए, इस तरीके से और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम मार्केट के अंदर देखते हैं कि एक चीज़ मौजूद है लेकिन सेम ब्रांड की प्रोडक्ट मौजूद है अलॉन्ग विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स और डिफरेंट फीचर्स। तो वो आपकी हो गई प्रोडक्ट एक्सपेंशन। सिमिलरली एक चीज़ जो मुझे नज़र आई वो ये थी कि डाइवर्सिफिकेशन,
कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट को एक बाय द पैसेज ऑफ टाइम थोड़ा डाइवर्सिफाई करती है ताकि वो लोगों के मूड को कैप्चर कर सके। उस वक्त जो एक चीज के इस्तेमाल करने के वो आदी हो गए हैं, तो अब वो थोड़ा सा उसको डाइवर्सिफाई करके एक नई चीज के साथ मार्केट में आ रहे हैं ताकि लोगों का मूड जो है वो उसके अकॉर्डिंगली उसकी यूजेज के हिसाब से बना रहे हैं। देन एक्विजिशन, एक्विजिशन के ऊपर हम कहते हैं कि हाँ भाई, एक कंपनी जब देखती है कि वो दूसरी कंपनी जब नजर आ रही होती है कि वो थोड़ा सा सर उठा रही है, तो जो बड़ी कंपनी क्या करती है, वो उसको एक्वायर कर लेती है। हमारे सामने बहुत सारी एग्जांपल्स प्रैक्टिकली मौजूद हैं, इंक्लूडिंग फेसबुक, जिन्होंने व्हाट्सएप को बाय किया था एक टाइम पे, और इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी को ओन किया। तो इस तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो है मैं इस हवाले से गैदर कर सका, तो मैंने कहा इस प्लेटफॉर्म पे आज के टॉपिक के अंदर मैं शेयर करूं। थैंक यू सो मच ज़ीशान जावेद सर एंड ऑल ऑफ यू फॉर हियरिंग मी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Thank you so much, Zeeshan sir. I come back over to that. That's very good and awesome things regarding the growth strategies that you have learned and to share about the experiences and the ideas with the team as well. I come over back to you again. Yes, I have asked Miss Raheela is here. She's a corporate trainer working with Punjab School in a learning and development head as. So I want to ask a question regarding: is there any growth strategy model pre-built in the system in the culture? इसराइला आपको आवाज आ रही है? Are you listening? Yes, sir. There was some problem, I think, because of I low want to connection. ask Can a you question repeat the right question? that is I want to ask a question regarding that. Is there any growth strategy model prevalent in our culture, in our system? Either we talked about in the institutions or we talked about in the organization sector. All right. So you want to ask specifically about increasing the sales or just bridging the gap between the institutions and the corporate sector? Yes, I am asking about is there any growth strategy model prevalent in our culture? If we talk about institutions or we are talk about in the corporate sector. क्या कोई स्ट्रैटेजी मॉडल प्रिवेल करता है हमारे सिस्टम के अंदर? Definitely, we have to create depending on our personal needs. No, it should be a personalized system. First of all, you have to analyze your organizational goals and you have to study the culture of your organization. So whatever is the philosophy and background of your organization, you have to study each and everything, and accordingly you have to develop strategies. So whenever you develop the strategy, you must see the market, the capacities, the market needs, and who are your competitors and what are the market trends going on. So when you study all these things, then you'll have a profitable data that you can implement your strategies on that. And before implementing the strategy on overall business, first of all, I would recommend that you should sample the things, sample your idea on some model population, model area, and then see that does it work or not? Was your strategy successful enough to cater more business or encourage more sales and generate general interest in your organization or like corporate sector? So after that, you can generalize your strategy and make it international level or national level. And always you have to take the feedback of your customers. You must know in depth that who are your customers, who are you dealing with, and what are their needs, and what do they want, keeping in mind the international trends and whatever international market competitors are offering to them. So you have to be competent enough, and you have to see all the trends, and then analyze each and everything before putting on your strategies on work and engaging your team. So your team should be, I think, reasonable enough. They should be well equipped. They should know the use of all the technology and trends. And then they should also know that they are working on some specific target. So there should be some small targets, achievable, measurable, and then you move on to next level. Right. Thank you so much. Thank you so much. I come back to you again in the next moment. Ji, Miss
Mominah, here we have Ms. Mominah. Are you listening? Yes, sir, I'm listening. Assalamu alaikum, everyone. Please, I am requested to all panelists that do not close the cams because it's a recorded session and their recordings are captured and posted in our YouTube channel as well as in the social media platform. So people want to listen you and see you to what kind of experiences and ideas and information will be well related to the audience as well. So today I have to ask about the growth strategy that is there any growth sector की strategy कोई growth types किस तरीके से we have set the patterns regarding the growth strategy? What are the tools and techniques used in implementing the growth strategies? All right, sir. First of all, thank you so much, Zeeshan, for giving me the opportunity. And okay, as I'm an educationist, so I'm going to talk from the education perspective and from an education point of view. So as we all know, education, it's a kind of a triangle between three people. That is the parents, teachers, and the student. So when you are talking about the growth strategies, always think about from these three perspectives, that all these three areas, they are covered. A growth strategy from the parents' perspective, a growth strategy from the stakeholders, from the students, and it has to be a holistic and it has to be a kind of an opportunity for all of them. So when I'm talking from the students' perspective, as definitely I'm a teacher, so the students, they are more close to me. So it has to be something as Ms. Raheela has shared, we have to look at the market and we have to see the trends, the kind of a trends which we are having in the market. Nowadays, there are many schools and everybody is in competitions. They are trying to give a good opportunities and facilities to their learners. There are different kinds of in educational, like now it's an IB, now there's a Cambridge system, now there is a normal educational stream, SNC. So there are different type of areas which they are covering. So definitely you have to compete with the trends and you have to give the best to your student. That is the first important thing, which is you have to keep in your mind when you are thinking from the student's perspective. Okay, now let's talk about the parents' perspective. So you have to give them all the opportunity, and how you are going to do them when you give opportunity to their kids, when they are equipped, when they have all the resources, when their classrooms are equipped, when they have an IT resources, they have in terms of furniture, in terms of stationery, in terms of IT resources, and everything is available. So that is the and you give an opportunity to the students where they grow. There's inclusive classrooms where you give an equal opportunity to all the students who belong to different kind of backgrounds, and you give them an equal opportunity. All right. And then it's about technology. Definitely nowadays it's a technology. So whatever courses you are offering, so it should be like which is in the trend, which is using in the market, and everybody nowadays, which is very like it's very important for our student, जो कि हमारे बच्चों की बेसिक जरूरत है. आप जब बात करते हैं, आजकल हम लोग पहले यही कहते थे कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं और हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उनमें गैप्स बहुत ज्यादा है. क्यों? क्योंकि यही होता है कि हम लोग जो पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं होता. So there is a gap between that. So just to bridge that gap, we need to come up with the strategies जहां पर हम बच्चों को वो real life experiences दें. Right, Ms. Mominah, मेरी यहाँ पे आपसे एक question ये, because we are going to bridging the gap between the institutions and the corporate sector. But the problem is that those students who are taking the degrees in different fields, when they came out into the market for the job, they are not able to get the job according to the field of interest. जिसको उसने डिग्री ली है, उसमें उसको जॉब नहीं मिल रही. सर आपको इसका सर जी सर, the dilemma is that, and the reason behind that is कि हम जो पढ़ाते हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं होता. आप जो है मार्क्स पे जोर देते हैं, आप डिग्रीज पे देते हैं, लेकिन आप स्किल्स पर नहीं देते. जी मैंने कहा हम प्रॉब्लम इज दैट कि हम स्किल्स नहीं सिखा रहे, हम किताबें रटा रहे हैं बैठ के. हम किताबें रटा ये हो जाएगी. जी बिल्कुल सर, हम लोग जो है मार्क्स पर तवज्जो देते हैं. जी राइट, कैरी ऑन.
जी, हम लोग सर आजकल के जमाने में हम लोग जो है ए ग्रेड्स कितने आए, पोजीशन क्या आई, वी आर फोकस मोर ऑन दैट। हम लोग बच्चों की स्किल पे नहीं करते। और सर आप अगर ज़ीशान सर और मैं बाकी पैनलिस्ट को भी यही एक बात इस तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश करूंगी, आप अगर बाहर की कंट्रीज पर भी देखें, वहां पर आपके जितने व्हाट्सएप, आपके जितने फेसबुक, आपके ट्विटर, they are not qualified degree holders, they have skills, and that's how they come up. So we need to inculcate and we need to give opportunity to our students where they can enhance their skills. हम उनको जो पढ़ा रहे हैं वो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो, ताकि उनकी वो ब्रिज, जो वो गैप्स हैं, वो फिल हो जाएं। हम लोग जो स्कूल में पढ़ाते हैं दैट इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू बुक, और जो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं दैट इज अ टोटली टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। बच्चों को तो पहले बहुत शौक लगता है कि व्हाट वी हैव रेड और हम लोग क्या कर रहे हैं और ये इम्प्लीमेंट कहाँ पर हो रहा है। सो सर वी नीड टू वर्क ऑन दोस थिंग्स। We need to work on the skills. I think so. Rather than to grasp out the books for the sake of a degree. Exactly. We are selling out the degrees in the market. सर अब We यही are selling मेरा out the ख्याल, degrees in the market. yes exactly, this what we are doing because we are just focusing on degrees. आप जितने लम से करवा लिया, आप लोगों ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के नाम साथ लग गए हैं, बट हम लोगों के पास स्किल्स कुछ भी नहीं है। So I guess from my point of view, and I guess I would conclude that we need to work on the skill, and this is how we are going to come up with these lapses and with these shortcomings. Thank you so much. So nice of you for your time. I come over to you again. Thank you so much again. Yes, Thank you, sir. Anyone else? Sheza is here with us. Yes, sir. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Cam to on kar lena. Sorry, sir. I am on traveling. That's why I can't on camera. I'm sorry Okay, for fine. the So what do you have to say about today's topic, that is growth, based on the growth strategy? क्या कहेंगी? Yes, sir. First of all, I define growth strategy in simple words. We can say it is the detailed outline that lists down the actions of business plans to expand operations, increase revenue, and boost the market position. Growth strategies are also used for the evaluation purpose by the organizations. Organizations can use it to evaluate financial, market, and industry position to develop business over time. And there are four important components of growth strategy that already discussed by Zeeshan Arif, which is goal, people, product, and tactics. And to show the importance of growth strategy, I have some statistics that I shared. According to Bureau of Labor Statistics, only 20% of new business close their doors before even reaching 2 years in operation. And the situation is even more worse because only 45% will reach in 5 years of operations. So growth is very essential to make it in business, and for it we have to follow different growth strategies and different patterns, like investing in customer acquisition, like CAC, customer acquisition cost, expanding product line expansion, and selling products across multiple platforms to promote growth strategies and follow it. Thank you. Gee, Ms. Sabir, you want to include something? Imran Sabir, anything you want to add on the things? जी सर दिशान, over to you. जी वालेकुम सलाम, आ जाए। असल में मैं बहुत एक्टिव बंदा हूँ, मेरी तरह के एक्टिव बंदे नहीं मुझे मिलते। हम दो ही बंदे एक्टिव हैं, एक मैं और एक निशान साहब, जो कि 500 माइल्स के साथ चलते रहते हैं। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नए बंदों को 500 माइल्स के साथ चलाऊं। हालांकि मैं तुमसे मैराथन तो नहीं चलानी, या मैराथन तो नहीं, यानी रेस तो नहीं लगवानी है, बट मैं एक्टिव करना चाह रहा हूँ। एक्चुअली सर, अगर सारे एक्टिव हो जाते तो पाकिस्तान कब का कहीं से कहीं पहुंच गया। सर मेरा ये ख्याल है इमरान साहब, बात बताऊं क्या जी, एक काम आपने करना ही है, कल जो करना है तो आज ही कर ले यार। वो बात आपकी सही है, बात ये है कि जिसने कहते हैं दूर जाना है, वो रास्तों की प्रॉब्लम्स की तो फिक्र नहीं ना करेगा। जिसने कहीं पहुंचना है उसने पहुंचना है, तो सारों को पहुंचना चाहिए। वेयर देयर इज विल, वेयर देयर इज वे। जब विल ही नहीं होगी तो कहाँ जाना।
अच्छा सारे नहीं, सारा का दिल जो है उसका मतलब निशान साहब के पास है कि जनाब उन्होंने सारों को लेके चलना है। The ना team ना, is को ready, हमारी, the ना मैं leader is अपनी ready, बात the कर, person who has to create the followers. I think so. नहीं नहीं सर, मैं अपनी बात कर रहा था, कुछ मेरी तरह सुस्त भी होते हैं, लेजी भी होते हैं, जो हमेशा लेट हो जाते हैं। सर बात हो रही। मैं यहाँ पे जी आपसे एक शेयर करता हूँ, मेरा MPhill का थीसिस चल रहा है एंड वी हैव जी 17 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ 17 में से only 2 students, me and also my colleague, we have submitted the thesis for defense before 6 months of the tenure. सही, राइट। So मैं ये कहता हूँ कि प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। If you have to lead out the things, अगर आपने दूर तक पहुंचना है और अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचना है, तो you have to be more active other things. जब आपके अंदर एम्बिशन होगी ना, जज्बा होगा, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। जब जज्बा ही नहीं होगा। गलती ये हुई थी मेरे से कि सारा जज्बा जो है ना वो मेरे अंदर ही आ गया था। इस एम्बिशन के साथ सर फिर ग्रोथ स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं। जी अच्छा, बात कर रहे थे हम, सर ने बहुत, जीशान साहब ने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी है, बताया, इंफॉर्मेशन शेयर की है। ऑर्गेनाइजेशन पहले से मौजूद होती है, बट उसको आगे ले जाने के लिए उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, उसके लिए एक हिकमत अमली तैयार की जाती है कि इसको कैसे आगे ले जा सकते। उसकी डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो मार्केट में सस्टेन करने के लिए, दूसरा कंपटीटर बहुत होते हैं, ठीक है, उनका मुकाबला करने के लिए, तीसरा इनोवेशन ले आने के लिए। और अगर कुछ उस मार्केट में जैसे इसके साथ स्टाफ भी होता है, ठीक है, तो स्टाफ का भी था स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो डिफरेंट रीजंस होती हैं मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटजी के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फिर प्लान करती है, एक तो करंट सिचुएशन को मद्देनजर रखती है और फ्यूचर के चैलेंजेस को, दोनों चीज़ों को जो है ना वो मद्देनजर रखती है। इसके अकॉर्डिंगली वो फिर अपने प्लान और मिशन और विजन के मुताबिक जो है ना वो स्ट्रेटजी बनाती है। अब जब स्ट्रेटजी तैयार होती है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लें, साथ साथ में वो अपने रिसोर्सेज को भी वो देख रही है। जस्ट उसने स्ट्रेटजी नहीं बनानी, जस्ट उसने जो है ना प्लान नहीं तैयार करना, उसने अपने रिसोर्सेज के अंदर रहकर जब रिसोर्सेज को भी एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है, तो देन होगा उसका जो विजन होता है, यानी कि पहले ये अगर वो जो प्रोडक्ट है या जो बिजनेस है, पहली बात तो बिजनेस है, उसको उसने एक्सपेंड करना होता है, यानी कि उसकी जो है ना लिमिट बढ़ानी होती है, ठीक है। जब बिजनेस को बढ़ाना होता है, जो भी प्रोडक्ट है, फिर उसको हमें जो है ना उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। देन हमें कस्टमर के बारे में सोचना पड़ेगा कि वो जो उसका कस्टमर है, ठीक है, वो कहाँ से आएगा, ठीक है। फिर जो है ना हम मार्केट को देखते हैं, मार्केट की सेगमेंटेशन, जैसे निशान साहब ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एलेबोरेट किया है कि मार्केट एक्सपेंशन, मार्केट की सेगमेंटेशन, पेनिट्रेशन, ठीक है, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन एंड एक्विजिशन, ये सारे मेन एलिमेंट्स हैं इसके हवाले से, ग्रोथ स्ट्रेटजी के हवाले से। दूसरा ये था कि हमारा जो इसमें दो चीजें, दो आप लोगों ने दिए थी, एक मार्केट की थी ऑर्गेनाइजेशन की, दूसरा एम्प्लॉयज की। तो एम्प्लॉयज के लिए भी स्टेप्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि मार्केट में या अगर हम देखें ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन, नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे आईटी की आ रही हैं, ठीक है, उसमें उनकी स्टाफ की डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है, उसमें ट्रेनिंग नीड एनालिसिस किया जाता है कि उनको किस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए, किस तरह के स्किल्स नीड हैं, क्या जो हमारे पास जो फोर्स है, जो हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, क्या वो जो मार्केट चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सकता है, क्या वो सेल कर सकता है, क्या वो ये सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है, ठीक है, उसके पास वो स्किल्स हैं या नहीं है। ये सारी चीजें देखने के बाद फिर उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम होता है, उसकी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर हो गया, ठीक है। इस तरह से उसकी प्रमोशन हो गई, जिससे उसको मोटिवेशन मिले और इंक्रीजमेंट मिले, जिससे वो जो है ना अच्छी यानी कि इफेक्टिव होकर एफिशिएंसी दे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जो मेरी समझ में आई हैं, जो मैंने इसमें ऑब्जर्व की हैं, देखी हैं, ठीक है। तो ये मेरी साइड से है सर। थैंक यू सर जी। यस, ओवर टू जिशान आरिफ सर से, काइंडली इसको क्लोज आउट करें।
with the feedback and about today's topic, anything which we have just discussed today. And inshallah, the next topic I will be mentioned, inshallah, today and night about the next webinar session as well. All right, sir. Before say anything, I would like someone, if anyone wants to add anything into this topic, it would be welcomed. Miss Mominah, Miss Raheela, anyone wants to add anything regarding today's topic? We have 5 minutes left, and everyone has 2 minutes to conclude all the things. Yeah, thank you so much, sir. I believe that our youth need to be so much they're so much demoralized, and there's a lack of energy, and society is not giving pressure on their improving skills and qualification. They are just after making money, and without wasting time on their completion of degrees or acquiring skill sets. That's why I think that we have the youth and we have the employees that are misfit in their organizations, and they are very frequently switching on their jobs because they feel that they are not getting enough salaries here and there, but they are not ready to equip themselves with the modern technology and the courses or skill set that market require for them. So this is the main area that we have to focus. We have to bridge the gap between qualification, societal needs, and their personal finance needs. And we have to make them confident that first of all, you have to complete your degrees and get proper qualification. And then you need to improve your skill set. So you have to be competent enough to get job in the market very easily and keep on improving, keep on learning. It's not enough that you have completed one degree or one course and that you are Mr. Perfect and you don't need anything else. So it should be on continuous basis because, research base, there's so much improvement. Right. Thank you so much. Disconnect over the chat. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Zeeshan sir and Zeeshan sir, कैसे हैं? Alhamdulillah, I'm fine, good. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा इसी चीज को लेकर के जैसे मैम ने बात की और बाकी डिस्कशन जो है वो मैंने सुनी एक्चुअली. It was disconnected. Sorry, ma'am, Raheela, continue please. Yeah, so I was talking that we have to switch the model of quick doing job, and we have to organization need to provide them training on regular basis. This should be a must. HR should make it ensure that each and every employee should have a specific skill set, and they should be updated according to the need of the time. Because everywhere there's a lot of information that's adding on, technology is advancing, and our employees and youth don't have that skill sets. That is mainly the gap is there. Right. Thank you so much. We have a short time. We have just 4 minutes left. We have to conclude out the things, and the recording will be ongoing. Anyone, Mominah, want to add something in 1 second? In 1 second. Yes, sir, definitely. I would like to add one thing, and that is, sir, I guess nowadays there is a lot of competitions, and when I talk about from a student perspective, there is a lot of fear and pressure, cultural pressure, peer pressure, competitions, market pressure, and there are so many things which are nowadays. When I compare myself and our studies and our time and era, it is now the conditions and the circumstances and everything has changed. Now it has become more challenging. So we need to have that empathy with our students as well, and we need to understand their point of view and their perspective as well. पहले ज़माने में इतने competitions नहीं थे, अब जो है बहुत ज़्यादा competition हो गया है, market में बहुत ज़्यादा हो गया. तो सर हम लोग आजकल अगर बच्चों के perspective से देखें तो हमें वो भी understand करना चाहिए कि उनके लिए अब challenges ज़्यादा हैं. So I would like to add this thing. So thank you so much. Zeeshan, yourself kindly conclude all the things and wind up this session, please. All right, जी. तो अच्छा, ज़ीशान कमर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, इनकी बात बीच में रह गई थी. तो अगर Kamaar sir, anything you want to add in 1 second, please?
जी सर, मैं जैसे मैम ने बात की, मैं इसी वे में बात करना चाह रहा था कि हमें जो ये साइकोलॉजिकल डैमेजेस है ना, ये हमें स्टार्ट से मिल रहे हैं, जब से हम पैदा हुए हैं ना तब से लेकर हमें ये जो मतलब जैसे साइकोलॉजिकल सॉरी डैमेजेस हैं, ये तब से हमें दिए जा रहे हैं कि फलां काम करोगे, नहीं करोगे तो मार पड़ेगी, ये करो, ये नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। मतलब हमें वो चीज़ सिखाई ही नहीं गई कि आप इस चीज़ को इस तरह से अगर लेके चलोगे तो आपको ये रिवार्ड मिलेगा, आप यहाँ पे मतलब इस चीज को लेके चलोगे तो आपको मतलब लीड करोगे। ये हमें चीजें शुरू से नहीं बताई गई। मैं एक लिटिल बिट छोटा सा एक्सपीरियंस था उसको शेयर करना चाहूंगा। मैंने रिसेंट अपना एक सीएसएस का सेमिनार था वो अटेंड किया, तो वहां पे वो जो हमें मतलब सर पढ़ा रहे थे, वो बता रहे थे, समझा रहे थे कि अगर आप मतलब इस तरह से सीएसएस को लेके आपने चलना है, अगर आप नहीं उसको सही तरह से लेके चलेंगे तो 97% फेल हो रहे हैं सीएसएस में, और 98% जो है रेशियो है इंग्लिश में फेल होने की। तब वहां पे भी मैंने क्वेश्चन रेज किया था कि मैंने कहा सर वाई हम क्यों मतलब नेगेटिविटी को शो कर रहे हैं, हम पॉजिटिविटी को शो करके हम ये बता सकते हैं कि 3% कामयाब हुए ताकि हम अपना जो प्रॉपर मैसेज है उसको में कन्वे कर सकते हैं, ग्रिप को मजबूत कर सकते हैं। अब जो मेरे जैसे होंगे, जो लोग जिनका पहले से वो डिस्करेज हुए होंगे, वो मजीद अपने आप को क्या ऊपर लेके चलेंगे, वो वहीं से देखेंगे कि वो अपने आप को 97 में कंसीडर करेंगे, 3% में कंसीडर नहीं करेंगे। जिनका कोई जोश शुरू से उबाले मार रहा होगा, बॉइल्ड हो रहा होगा, वो वहीं से अपने आप को समझेंगे कि मैं आगे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 97 तो 100 में से फेल हो रहे हैं, मैं आगे जाके क्या करूंगा। वहां पे हमें ये बताएं कि 3% हो रहे हैं और रेशियो बढ़ रही है, हमें पॉजिटिवली लीड करेंगे। जब हम साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होंगे फिर हम इस चीज को लेके चलेंगे और उस चीज को देखेंगे कि हाँ अब हम ये कर सकते हैं, फिर हम करेंगे। और फिर जैसे दूसरी में हमने बात की, सॉरी नेम नहीं याद मैं मुझे। यहाँ पे सॉरी माजरत मैं आपको डिस्ट्रैक्ट करूंगा। प्रॉब्लम ये है बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, माजरत अगेन। द प्रॉब्लम इज दैट कि हम अपने आप को जब खुद